morning, students. Today, under chapter Human Health and Diseases and Revision Series Part 2, we are going to revise following topics. We will study about immunity, the types of immunity like innate and acquired immunity. Acquired immunity is of two types, that is antibody-mediated immunity and cell-mediated immunity. We will also study the structure of antibodies, active and passive immunity, and active and passive immunization. What are allergies, autoimmunity, and the different parts of immune system that are primary and secondary lymphoid organs. At the end, we will practice the board-related questions which are asked from these topics. So let's start. इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या है? हमारी जो बॉडी की एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. This ability is known as immunity and it is provided by immune system. There are two types of immunity, innate and acquired. Innate immunity जो है वो birth से present होती है, जबकि acquired immunity we acquire during our lifetime. Let's study them in detail. Innate immunity non-specific है, means it is giving protection against wide range of pathogens and it is present from birth. There are four barriers which comes under innate immunity. पहला है physical barrier. Physical barrier में first is skin. Skin को हम first line of defense बोलते हैं. ये सभी तरह के microbes को हमारी body में enter होने से prevent करती है. Second is mucus coating present in the epithelial lining of the different tracts present in our body. Respiratory tract, gastrointestinal tract, urinogenital tract. ये जो tracts होते हैं, इनकी जो epithelium है, उसमें mucus secreting cells होते हैं जो mucus produce करते हैं. Mucus, pathogens, कोई भी pathogen अगर enter होगा तो they will trap that pathogen and removes from the body with the help of WBCs. So physical barrier में आ गया skin and mucus coating. Next is physiological barriers. Physiological barriers में सबसे पहले हम आते हैं stomach में. So stomach secrete करता है hydrochloric acid which kills the germs present in the food and thus protects the digestive tract from infection. माउथ में सलाइवा है और टीयर्स हमारे जो आईज प्रोड्यूस करती हैं, इनमें प्रेजेंट होता है एंजाइम लाइसोजाइम विच इज एंटीबैक्टीरियल एंड प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ. थर्ड टाइप ऑफ बैरियर इज सेल्यूलर बैरियर. सेल्यूलर बैरियर में हमारी WBCs के डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से. इसमें पहला है न्यूट्रोफिल्स विच आर ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर leukocytes and monocytes. Monocytes जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं. मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स दोनों का ही काम है टू फेगोसिटाइज द फॉरेन पैथोजन. Then comes the natural killer cells which are a type of lymphocyte. They directly destroy the pathogen. Next is साइटोकाइन बैरियर. साइटोकाइन बैरियर क्या है? जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं. दैट केमिकल इज नोन एज इंटरफेरॉन. ये जो इंटरफेरॉन्स है वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये पैथोजन स्पेसिफिक है. सपोज आपको अगर चिकन पॉक्स होता है तो you suffer from the disease and then you develop immunity against that disease. आप second time chicken pox से suffer नहीं करते हैं. तो ये immunity आपकी हुई acquired immunity. और जब आपको chicken pox हुआ है तो जो immunity develop होगी that is only for the chicken pox, not for other diseases. So you can see ये किस टाइप की हो गई? Pathogen specific immunity. ये डिपेंड करती है मेमोरी. जब भी बॉडी में फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन एंटर होता है तो बॉडी जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स. क्योंकि पैथोजन न्यू है बॉडी के लिए तो ये रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है. एंड इफ द पैथोजन इज स्ट्रॉन्ग इनफ
So it will be able to cause the disease and our immune system will not be able to help at that time. ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल्स फॉर्म हो जाते हैं बॉडी में, एंड अगर सेकेंड टाइम सेम पैथोजन एंटर्स इन योर बॉडी, ओके, सो high intensity secondary response is produced and thus prevents that infection from occurring again. So this second intensified secondary response is also known as an amnestic response. ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ये हाई इंटेंसिटी का होता है क्योंकि बॉडी के पास पहले से मेमोरी होती है ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। ये दोनों जो रिस्पॉन्सेस हैं ये दो टाइप के लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, देखो दोनों अलग अलग तरह से एक्ट करते हैं। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, जब कोई भी फॉरेन पैथोजन व्हिच कैन बी कॉल्ड एज एंटीजन जब वो एंटर होता है बॉडी में, तो बी लिम्फोसाइट आर्मी प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स की व्हिच आर नोन एज एंटीबॉडीज, and these antibodies they are pathogen specific, they go and attack the pathogen. You can see this is the diagram structure of an antibody molecule. So antibody molecule में there are two long heavy chains and two short light chains are there. दोनों heavy and light chain में दो regions होती है, एक है variable region, this part you can see this is the variable part and this segment is the constant part. कांस्टेंट पार्ट सभी एंटीबॉडीज में सेम होता है, जो वेरिएबल पार्ट है वो हर एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी में वैरी करता है, इट इज एंटीजन स्पेसिफिक। सो इन द वेरिएबल पार्ट ऑफ हेवी एंड लाइट चेन देयर इज प्रेजेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये पर्टिकुलर जो भी पैथोजन है उसके स्पेसिफिक होती हैं एंड दे बाइंड विद दैट एंटीजन एंड दस फॉर्म्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, जिससे फिर न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस आकर एनगल्फ कर लेते हैं, फेगोसाइटाइज कर लेते हैं एंड रिमूव्स फ्रॉम द सर्कुलेशन। ठीक है, सो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा। You should know the different parts. This is the antigen binding part. These are the heavy chains. These are the light chains. And this region is the constant part of the antibody molecule. So B lymphocytes body को protect करते हैं by producing antibodies. And this type of immune response is known as humoral immune response. एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फर्स्ट टाइप है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं दे आर ऑफ फोर टाइप्स, IgA, IgM, IgE and IgG. Now the second type of immune response is cell mediated immunity which is provided by T lymphocyte. T lymphocytes, they directly attack the pathogen and destroys them. Our body is able to differentiate between self and non-self. ठीक है, हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं उनके सरफेस पे जो प्रोटीन्स हैं they are recognized as self proteins by our immune system. And if any foreign pathogen enters in our body, they immediately come to know that the proteins present on their surface are not belonging to the body. So our immune system is capable of differentiating between self and non-self. Okay, and the cell-mediated immune response is responsible for graft rejection. So whenever any transplantation is done of any organ, so that transplant, that graft, it gets rejected by the body because our cell-mediated immune system, that is the T lymphocyte, immediately recognizes that the graft doesn't belong to our body, it is foreign and they attack it. So that is about that is about innate and acquired immunity. Next is active and passive immunity. Active immunity host is exposed to an antigen
ठीक है, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है अगेंस्ट दैट पैथोजन। एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो हम डेवलप करते हैं दैट इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है क्योंकि उसे टाइम लगता है पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके अप्रोप्रिएट एंटीबॉडीज बनाने में। सो इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। तो जब हम वैक्सीन में क्या करते हैं, डेड या किल्ड माइक्रोब जो है दैट इज इंजेक्टेड इन आवर बॉडी एंड the primary response is produced and memory cells are formed which further protects us from the pathogen if it enters further in the life of a person. सेकेंड इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है दे आर गिवन टू अ पर्सन टू प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ दैट पर्सन अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट। एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन से एक्सपोजर होता है और बॉडी then naturally antibodies banati hai to that antigen. So it is slow, it takes time to give full response. Whereas passive immunity, it is faster and ready-made antibodies are injected into the body that gives protection against the foreign pathogen. Example of passive immunity is जो lactating mother है वो जो initial milk produce करती है yellow colored milk which is known as colostrum contains antibody IgA. तो इसलिए कहा जाता है ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी बिकॉज मिल्क के साथ साथ उसे एंटीबॉडीज मिलती है जो इन्फेंट को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इज ड्यूरिंग द फीटल लाइफ through the placenta the fetus receives antibody that is IgG. ठीक है, coming to the vaccination and immunization. So principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of immune system. तो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कोरोना वायरस है जो पैथोजन है उसे या तो इनएक्टिवेट कर देते हैं या वीक बना देते हैं या उसका जो प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज करके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं and slowly the body will develop the memory cells, it will produce antibodies against that antigen. ठीक है, now अगर एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो these memory cells will quickly form the antibodies and protects against that pathogen. So, वैक्सीन की वजह से क्या है, हमारी बॉडी में मेमोरी बी एंड टी सेल्स बन जाते हैं तो लाइफ में कभी भी एक्सपोजर होगा सो दे विल क्विकली एक्ट एंड प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज. So this is again vaccination example of active immunity. Now अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो जाता है किसी डेडली माइक्रोब से और हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, तो इन दैट केस वी वोंट डिपेंड ऑन इम्यूनाइजेशन. जैसे कि टेटनस, अगर कोई किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है, देयर इज ब्लड लॉस, so tetanus injection is given. In that injection, antibodies or antitoxins are injected in the body. ठीक है, तो इससे क्या है, वो एंटीबॉडीज इमीडिएटली उस पैथोजन को किल कर देगी एंड विल प्रोटेक्ट द बॉडी. सो दिस इज पैसिव इम्यूनाइजेशन. Another example of passive immunization is snake bite. अगर snake bite होता है तो जो टॉक्सिन है उसको काउंटरएक्ट करने के लिए एंटीटॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट. तो ये हो गया एग्जांपल पैसिव इम्यूनाइजेशन का. Nowadays, we are able to develop vaccines and antibodies on large scale using recombinant DNA technology. And one example of that is hepatitis B vaccine, which is produced using yeast. Next topic is allergies. कोई भी सब्सटेंस है, फॉरेन सब्सटेंस है जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक एग्जैगरेटेड, एक हाई इंटेंसिटी का इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, सो दैट इज नोन एज एलर्जी. जो सब्सटेंस है एनवायरमेंट का जो एलर्जी कॉज कर रहा है दैट इज नोन एज एलर्जेंस.
एलर्जी होती है एंटीबॉडी IgE की वजह से। एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स एंड डस्ट, जो डस्ट होती है उसमें माइट्स आर प्रेजेंट, पोलन ग्रेन्स आर देयर, एनिमल डेंडर, एनिमल फाइबर्स आर देयर, एक्सेट्रा। एलर्जी के जो सिम्टम्स है उसमें आता है स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एलर्जी क्यों होती है? ड्यू टू द रिलीज, ये जो IgE है एंटीबॉडी, ये क्या करती हैं? दे आर प्रेजेंट इन द मास्ट सेल्स, और ये मास्ट सेल्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस केमिकल्स हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। These chemicals are causing inflammation and all these allergic symptoms. ठीक है, एलर्जी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एलर्जी किस वजह से हो रही है, स्मॉल डोज जो होता है एलर्जन का दैट इज गिवन और उसका रिएक्शन स्टडी किया जाता है। एलर्जी ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग्स जो यूज करते हैं, दे आर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, जो ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं, एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टीरॉइड्स। ठीक है, तो ये एलर्जिक, जब भी एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं लाइक सीट्राजिन is there, so they have all these substances which reduces the symptoms of allergy. One example of allergy is asthma. Next is autoimmunity. We studied that the immune system is capable of differentiating between self and non-self cells. But due to some genetic or unknown reason, the body's immune system attacks its own cells, and this is known as autoimmunity. And the diseases are autoimmune diseases. Example, rheumatoid arthritis and myasthenia gravis. To the immune system present in the body. ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम है उसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज। तो हम पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं उसमें आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है बोन मैरो एंड थाइमस। Bone marrow and thymus are the lymphoid organ where B and T lymphocytes, they originate, they mature and proliferate to other lymphoid organs. Bone marrow is the place where the origin of B and T lymphocyte occurs. B lymphocytes, they mature and differentiate in the bone marrow itself. Whereas T lymphocyte, they mature in the thymus. They move to the thymus and their maturation occurs in the thymus, where they differentiate and form three different types of T lymphocytes, that is T helper, T killer and T suppressor cells. After maturation, these lymphocytes, they migrate to secondary lymphoid organs. Example, spleen, lymph node, tonsils, Peyer's patches of small intestine and appendix. ये सारे नेम्स आपको याद रखने हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? They provide the site for interaction of lymphocyte with the antigen. Bone marrow मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है। थाइमस जो है it is a lobed organ and it is present near the heart beneath our chest bone. जब बर्थ होता है तो thymus is largest in size and it keep on reducing with age, and by the time the child attains puberty, it becomes very small in size. Talking about the secondary lymphoid organ, first spleen. Spleen is present below the stomach. It is a bean-shaped organ. ठीक है, यहाँ पे जो lymphocytes होते हैं जो proliferate करके आ रहे हैं आपके bone marrow और thymus से, ठीक है, and phagocytes, they trap the pathogens present in the blood and thus filters the blood. Spleen is also known as graveyard of RBCs and it is the reservoir of erythrocyte. It stores RBC for emergency situation. Next secondary lymphoid organ is lymph node. Lymph nodes, they are solid structure. ये जो हमारा lymphatic system है उसमें at regular interval lymph nodes are present. ठीक है, ये क्या करती हैं? जो भी पैथोजेंस अगर आपके टिश्यू फ्लूइड में एंटर हो गए, लिम्फ में एंटर हो गए हैं,
तो उन सबको यहाँ पे न्यूट्रलाइज करते हैं. Now, the next secondary lymphoid organ is MALT, that is mucosa associated lymphoid tissue. तो जो हमारे lymphoid टिश्यू है उसका 50% जो lymphoid टिश्यू है वो माल्ट है. जहाँ पे भी म्यूकस की लाइनिंग है वहाँ पे जो lymphoid टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट में. So they are also digesting the foreign pathogens. So this is about the primary and secondary lymphoid organs. Now let's solve some of the questions related to this topic. Coming to 2-mark questions which are asked in the exam. Mention the site in the body where the B cells and T cells are formed. एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यू रीड द क्वेश्चन 2 to 3 times, अंडरलाइन द पार्ट्स विच आर आस्क्ड. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो साइट, कहाँ पर बॉडी में बी और टी सेल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, एंड देन यू हैव टू गिव वन डिफरेंस. तो बी और टी सेल फॉर्म कहाँ हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है, मैचुरेशन नहीं पूछा है. सो देयर ओरिजिन इज इन बोन मैरो. तो आपके आंसर में बोन मैरो होना जरूरी है. देन गिव वन डिफरेंस बिटवीन देम. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंस. जैसे बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बोन मैरो में डिफरेंशिएट होते हैं, वेयरएज टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट्स इन द थाइमस. बी लिम्फोसाइट एंटीजन पे अटैक करते हैं बाय सिक्रीटिंग एंटीबॉडीज. टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली किल्स देम. B lymphocytes have short lifespan, T are having long lifespan. They become active and multiply to form plasma cells. B cells directly antibodies नहीं produce कर रहे. They first form, they multiply when they get activated and forms the plasma cells and memory cells. These plasma cells then produces the antibody. And T lymphocyte, they differentiate into T helper, killer and suppressor cells. So इनमें से because question में सिर्फ एक difference पूछा है तो you can write any one difference. Next question. How would a person's immune system be affected in the absence of the thymus gland? ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, कोई भी पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम कैसे अफेक्ट होगा अगर उसकी बॉडी में थाइमस ग्लैंड एब्सेंट है. ठीक है, तो एज वी नो दैट टी लिम्फोसाइट ओरिजिन होते हैं बोन मैरो में, but they mature in the thymus gland and differentiate in the thymus gland. So T lymphocyte, they will fail to mature and thus causing the immune system to not develop. तो उसका immune system develop नहीं होगा and the person will be highly susceptible to most of the diseases. Next question. List the preventive barriers that protect the body against microbial bacteria entering the gut through the food consumed. तो आपको क्या बताना है, बैरियर बताना है ना. 4 टाइप के बैरियर हमने पढ़े, तो उनमें से आपको उस बैरियर का नाम बताना है जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट द माइक्रोबियल बैक्टीरिया एंटरिंग द गट. गट मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं. जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो कौन सा ऐसा बैरियर है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फूड जब हम माउथ में लेते हैं तो माउथ में क्या है, लाइसोजाइम. लाइसोजाइम present in the saliva that will act as a barrier. Then stomach secretes hydrochloric acid and पूरा जो digestive tract है that is lined with mucus. So mucus coating the epithelial lining in the gut. यहाँ पे आप फिजिकल बैरियर नहीं लिख सकते या फिजियोलॉजिकल बैरियर नहीं लिखोगे, आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल देना है बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड कि गट में कोई भी पैथोजन अगर एंटर हो रहा है अलोंग विद फूड तो कौन से बैरियर्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ देन स्टमक एंड द एंटायर गट इज लाइन्ड विद म्यूकस. सो दे आर एक्टिंग एज बैरियर. ठीक है, so half of mark for each. And the next part is asking, name the immunity type observed in this case.
तो किस टाइप की इम्यूनिटी है? Barriers comes under innate immunity. So the immunity is innate immunity. Next question. State the significance of mother's milk to a newborn infant. न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए मदर का मिल्क कैसे सिग्निफिकेंट। तो हमने पढ़ा कि जो इनिशियल मदर्स मिल्क है, येलोइश मिल्क, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रॉम, इसमें आईजीए एंटीबॉडी होती है। तो बच्चे को आईजीए एंटीबॉडी मिल रही है, दैट गिव्स पैसिव इम्यूनिटी टू द child. नेक्स्ट। व्हाट इज इंटरफेरॉन? हाउ डू दे मॉनिटर द इन्फेक्शन ऑफ न्यू सेल्स? दिस क्वेश्चन मतलब व्हाट इज इंटरफेरॉन क्या है और कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं द इन्फेक्शन ऑफ न्यू सेल्स। How do interferons produced by cytokine barrier provide innate immunity in humans? So in any way it can be asked. So innate जो interferons क्या है? Virus infected and tumor cells they secrete a protein that is known as Interferon. ठीक है। Interferons क्या करते हैं? हाँ, they prevent the viral replication in non-infected cells. Next is differentiate between active and passive immunity. Active immunity में क्या है? Antibodies are developed by our own cells in response to antigen. We administer antigen and the body produces antibody. Passive immunity में we administer the antibodies and we inject the antibodies and they are protecting us against the active immunity is slow, it takes time, whereas passive immunity is fast. एक्टिव इम्यूनिटी स्टेज फॉर लॉन्गर पीरियड। एक बार वैक्सीन लगा, कोरोना वायरस का वैक्सीन लगा, तो वी हैव सर्टेन पीरियड कि 9 मंथ्स के सेकेंड डोज के 9 मंथ्स के बाद ही आपको बूस्टर डोज लेना है, बिकॉज इट इज इफेक्टिव फॉर दैट मच पीरियड ऑफ टाइम, whereas passive immunity is for short period of. What are allergens? How do they cause inflammatory response inside human body? So, allergens क्या है? These are the substances which causes an exaggerated hypersensitive reaction in our body. ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हो डस्ट, पोलन ग्रेन। हाउ डू दे कॉज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स? इन्फ्लेमेशन जो भी सिम्टम्स हैं एलर्जी के वो कैसे कॉज करते हैं? ठीक है, तो ये जो एलर्जेंस होते हैं ये क्या करते हैं? दे कंबाइन विद आईजीई एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल। हमारी बॉडी में जो मास्ट सेल्स हैं उसमें आईजीई एंटीबॉडी वहां पर होती है और मास्ट सेल्स फिर क्या करते हैं? दैट कॉजेज सेल्स टू बर्स्ट and they release histamines and serotonin which causes inflammatory response. What are autoimmune diseases? Give two examples. Autoimmune diseases, when our immune system fails to differentiate between self and non-self cells and attack our own cells, that is known as autoimmune disease. दो एग्जाम्पल है rheumatoid arthritis and myasthenia gravis. How does the skin serve as the first line of defense? तो स्किन में क्या होता है? हमारे जो स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, उनकी जो सिक्रीशंस है ऑयल एंड स्वेट, ये कंटेन फैटी एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ये दोनों एसिड्स हमारे सरफेस को एसिडिक बनाते हैं and they have antibacterial antifungal activity. In addition to that, the sweat contains lysozyme, which kills many of the bacteria present on the surface of skin. Thus, it acts as the skin acts as first line of Defense. defense. A young boy, when brought a pet dog home, started to complain of watery eyes, running nose. The symptoms disappeared when the boy was kept away from the pet. Young boy था, वो एक पेट डॉग घर पे लेकर आया एंड ही स्टार्टेड शोइंग दीज सिम्टम्स। सिम्टम डिसअपियर हो गए जब पेट को बॉय से दूर कर दिया। सो नेम द टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स क्या था? एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जी के लिए एंटीबॉडी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? आईजीई।
And chemicals are histamine and serotonin produced by the mast cell. Antibody type बताना IgE, chemical हो गए आपके histamine and serotonin. And the response is allergic response. Mention the name of any one drug that could be given to the body for immediate relief. हिस्टामाइन है उसके साथ बाइंड होने वाले हम क्या देंगे एंटीहिस्टामाइंस would be given for immediate relief. Coming to 3-mark questions. Why does a doctor administer tetanus antitoxin and not a tetanus vaccine to a child injured in roadside accident with a bleeding wound? Explain. ठीक है, a child is there, वो इंजर्ड हो गया है रोड एक्सीडेंट में एंड ही इज हैविंग अ ब्लीडिंग वूंड. ठीक है, तो डॉक्टर ने टेटनस एंटीटॉक्सिन क्यों दिया, टेटनस वैक्सीन क्यों? ठीक है, तो इन दिस केस क्योंकि ऑलरेडी the pathogen might have entered into the body of the child through the bleeding wound. So immediate immune response is required. और अगर हम वैक्सीन देते हैं तो it takes time for developing the immunity. So for this reason हम क्या करते हैं, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए तो preformed antibodies or antitoxins is directly injected. If we had given vaccine, that would not give quick relief and thus not considered effective. Okay, see the picture. Identify P, Q, R in the schematic diagram of an antibody given above and answer the question. तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है P, Q, R. P antigen binding site. Q, Q क्या है? Constant region of light chain. And R is the heavy chain. So as I told you कि जो figure है उसकी labelings अच्छे से learn करनी है. The diagram could be asked for drawing or in this way labeling can be asked. Write the chemical nature of antibody. Antibodies क्या होती है? Protein होती है. So you have to write they are proteins. Name the cells that produce antibody in humans. Antibody producing cells हैं B cells. Mention the type of immune response provided by an antibody. Type of immune response है ना, किस टाइप का immune response provide कर रही है antibody? AMI or you can say humoral immune response or antibody mediated immune response. Question 13. List any two situations when a medical doctor could recommend injection of preformed antibodies into the body of a patient. ठीक है, पहले इतना पार्ट समझ लेते हैं. दो सिचुएशन बतानी है जिसमें प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज पेशेंट को इंजेक्ट करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करेंगे. Name this kind of immunization and mention its advantage. इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को हम क्या कहते हैं और इसके एडवांटेज. दो सिचुएशन, अगर पर्सन इन्फेक्टेड है with a deadly microbe to which quick response is required like tetanus, we need to inject preformed antibodies. Another example is if a person gets snake bite, then also we need to give the preformed antibodies against the snake. क्योंकि एंटीबॉडीज दे रहे हैं तो ये नेम दिस काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन. So this kind of immunization is known as passive immunization. It provides immediate relief. Next, name the kind of immunity attained when instead of antibodies, weakened antigen are introduced into the body. तो हम antibody नहीं दे रहे, weakened antigen दे रहे हैं. तो ये किस टाइप की immunity हुई? This is known as active immunity. Differentiate between active and passive immunity already discussed. Give any one example where passive immunization is needed. Passive immunization मतलब हमें antibodies देनी है. Snake bite and tetanus का example दे सकते हैं. What is the role of each of the following in the body defense? Antihistamine, plasma cells, helper T cells.
Antihistamine क्या है? They are drugs which are given during allergic reactions, and they bind with the histamine secreted by mast cell and released from the allergy. प्लाज्मा सेल्स क्या है? प्लाज्मा सेल्स आर एंटीबॉडी producing cells. जब B lymphocyte activate होते हैं, they differentiate and form plasma cell and memory cells, and these plasma cells then produces the antibody. हेल्पर टी सेल्स का दो काम है. पहला है कि वो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उनको डिफरेंशिएशन में भी हेल्प कर रहे हैं, एंड सेकेंड दे स्टिम्युलेट द बी lymphocyte to produce antibody. So students, it's not necessary you should by heart all these answers as such. By understanding, you can frame your own answers. Coming to 5-mark question. Name and explain any 4 lymphoid organs present in humans. ठीक है, तो किसी भी 4 lymphoid organ primary secondary को आपको explain करना है. Categorize the named lymphoid organs as primary or secondary lymphoid organs giving reason. ठीक है, पहला आपको पहले पार्ट में क्या पूछा है? Name and explain any 4. नाम बताना है और उसको explain करना है किसी भी 4 lymphoid organs. ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया बोन मैरो, थाइमस, lymph node, and you can take one more like malt or spleen. आप जब उसे एक्सप्लेन कर रहे हो उसी के साथ आप क्या बताओगे? वेदर दे आर प्राइमरी और सेकेंडरी. तो प्राइमरी में सिर्फ 2 ही हैं, बोन मैरो और थाइमस. बाकी सारे आपके सेकेंडरी में आते हैं, और रीजंस देने हैं. ठीक है, क्यों उन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी में डाला है, तो वही आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. सो बोन मैरो प्राइमरी है, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स मेच्योर होते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं. थाइमस में ये भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है. टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन होता है. ठीक है, इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट, big in size at the time of birth and keep on reducing, and is smallest at pivot. Lymph nodes, these are secondary lymphoid organ present at regular intervals and in the lymphatic vessels. और यहाँ पे क्यों इन्हें सेकेंडरी बोलते हैं? बिकॉज दे फिल्टर द lymph and engulf the pathogens if any are present in the lymph. Spleen bean shaped organ है, which is the largest lymphoid tissue. ठीक है, ये फिल्टर करता है हमारे ब्लड को. So this way you can so these are some of the questions. Similar questions can be asked. You have to just understand what is asked in the question and write accordingly. All the best, students. I will be back with my next video. In that we'll discuss about AIDS. Thank you.